Hello students, 5 questions of exercise 9.4 we have done. Today we have to start from question number 6 and we will complete this exercise. Question number 6 is the price of an automobile lubricant is rupees 61.99 including 7% tax. Then find the price of the oil excluding the tax. Price of an lubricant including the 7% tax is given to us and we have to tell price without tax. Okay, so it is same as fourth and fifth question. In that question also we have done how to find the price of a thing without tax when its price including the tax is given to us. ठीक है, तो this one you will do by yourself. बिल्कुल easy है. Yesterday we have done same questions. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7. द मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड इयरिंग्स इज 10,000. ड्यूरिंग द दिवाली द प्राइस ड्रॉप्ड बाय 25%. एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर रिड्यूस्ड टू ₹1000. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इयरिंग्स? इफ 12% GST वॉज चार्ज ऑन गोल्ड ज्वेलरी, हाउ मच ही विल पे फॉर द इयरिंग्स ड्यूरिंग सेल? तो देखो व्हाट इज द क्वेश्चन. मार्केट प्राइस ऑफ ए गोल्ड इयरिंग्स इज गिवन and it is given that during Diwali 25% price was dropped. Price was dropped means discount was there. 25% का discount आ गया due to festive season. And the price amount of the profit made by shopkeeper was reduced to 1000. और profit जो है shopkeeper का कितना रह गया? Only 1000 rupees. Then we have to tell what is the cost price. तो see how we have to do. मार्केट प्राइस गिवन है 10,000, डिस्काउंट गिवन है 25%, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा. वी विल फाइंड द सेलिंग प्राइस यूजिंग द फॉर्मूला. लाइक फ्रॉम 10,000 वी विल रिड्यूस 25% प्राइस ऑफ इट. 25% इसका रिड्यूस कर देना है बिकॉज 25% वॉज ड्रॉप्ड. तो प्राइस आ गया 7,500. ठीक है, इट इज़ अवर SP. फ्रॉम मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट वट वी कैन फाइंड सेलिंग प्राइस, मतलब उसने 7,500 में बेचा है. एंड इट इज़ गिवन दैट हिज प्रॉफिट वॉज ओनली 1000 रुपीज़. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. यू कैन सी, देखो ना, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर रिड्यूस्ड टू ₹1000. उसका प्रॉफिट घट के सिर्फ कितना रह गया? ओनली 1000 रुपीज़. तो इन 7,500 ही हैज़ सोल्ड एंड 100,000 रुपीज़ प्रॉफिट ही हैज़ मेड. तो इट मीन्स वट वॉज CP? 1000 माइनस कर देंगे. फ्रॉम SP वी विल सब्ट्रैक्ट the profit and we will get a cost price, that is 6500. It means 6500 was the cost price of that gold earrings that shopkeeper has bought and then he has sold it for 7,500. So 1000 rupees profit he has made. Now in second part they have asked if 12% GST he has to pay on the gold, then how much amount he has to pay. So देखो 7,500 is the price of the selling price of that earrings plus 12% GST he has to give. So we will add 12% of the amount in it, 7,500. Calculation we will do and we will see that it will cost 8,400 rupees to him. Selling price 7,500 है but GST उससे extra देना पड़ता है. So about now 900 rupees he has to give as a tax. So it means he has to pay 8,400 rupees for that gold earrings. Clear बेटा? Next देखो, in a year end sale Kamal bought a sofa set at 30% discount whose actual price was 37,500. He has bought the sofa set as 30% discount. Actual price was 37,500. Actual price means it is also market price. Actually price means that was market price was 37,500. डिस्काउंट चल रहा है 30%. सो सेलिंग प्राइस विल बी 37,500 माइनस 30% ऑफ 37,500. कैलकुलेशन करके आ गया 26,250. बट नेक्स्ट देखो, हाउएवर ही हैज़ टू पे GST ऑफ 6%. ठीक है, टैक्स लग गया उसके ऊपर 6% टैक्स ही हैज़ टू पे. तो देन हाउ मच ही हैज़ टू पे? तो टैक्स देना है तो इट मीन्स एक्स्ट्रा ही हैज़ टू पे 26,250 में 6% ऑफ 26,250 वी हैव टू ऐड. ठीक है, 6% ऐड कर दिया मीन्स 1,575 रुपीज़ और ऐड हो गए एज द टैक्स एंड
Finally, he has to pay 27,825 rupees for the sofa set. After getting 30% discount, and on the other hand, on paying 6% GST. 30% discount चल रहा है, that is okay, but 6% GST also he has to pay. और वो पे करके उसको it will cost him 27,825. Clear बेटा? So today you will complete this exercise and chapter is also completed. This was our last exercise of this chapter. So complete it. Whose the previous work was pending, that students will also complete the work. Okay, so tomorrow we will start a new topic. Thank you.